We have here the incident direction theta contains less number of particles than the incident beam. And why is that? So this is due to the fact why since a number of particles, number of particles have scattered in different direction, have scattered in different other directions. Uh, So not captured by the detector. So this would attribute to sort of loss. So this decrease इस डिक्रीज को हम कैसे रिलेट करेंगे वी कैन डिक्रीज दिस डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल वी कैन रिलेट इट विद द टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन दिस डिक्रीज इन द number of particles uh, is measured by the total scattering cross section by the total cross section cross section sigma. Yeah, that is the number of particles removed from the incident beam along the incident direction and is proportional to is proportional to sigma. That is the total uh, cross section, or is equivalent to the imaginary to equivalent to the imaginary part of f of 0, that is theta is equals to 0 direction. Okay, now ये जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है सॉरी ऑप्टिकल थ्योरम दिस ऑप्टिकल थ्योरम वी हैव रिटन दिस ऑप्टिकल थ्योरम फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग दिस ऑप्टिकल थ्योरम इज आल्सो वैलिड फॉर इन इलास्टिक स्कैटरिंग तो थोड़ा सा हम इन इलास्टिक स्कैटरिंग को भी डिस्कस कर लेते हैं एंड देन इसको वाइंड अप करेंगे. So the जो scattering amplitude की equation थी that was f of theta. We can write this scattering amplitude equation f of theta in terms of f sub L of k terms, and so the uh, scattering scattering amplitude can be written as कैसे? We can write it as f of theta, and this is in fact summation over L is going from 0 to infinity, which is 2L plus 1 f sub L of k and PL of cos of theta. यहाँ पर f sub L of k क्या है? Where f sub L of k is 1 over k summation over not summation तो वहाँ पर मौजूद है. So we could write, so this is 1 over k e to iota delta L, and we have sine delta L, which is 1 over 2 iota k
factor e to the power 2 iota delta L minus 1, which is 1 over 2 iota k uh, delta L minus 1. Why? Because this 2 iota जो है वो डेल्टा k के बराबर है, सॉरी एस एल ऑफ k के बराबर है, विद एस सब एल ऑफ k जो है दैट इज इन फैक्ट e टू द पावर 2 iota k iota delta L is 2 iota delta L के बराबर। ओके सो अगर सपोज देर इज नो लॉस ऑफ फ्लक्स, लॉस ऑफ फ्लक्स का मतलब है देर इज नो लॉस ऑफ पार्टिकल्स, वी कैन राइट the S matrix, that is the mod of S matrix equals to 1. So in case in case there is no loss of flux, uh, we must have क्या चीज, the mod of S, this is not delta, this is S, so we have S L of K mod equals to किसके बराबर होगा, that is equals to 1. That is the case where there is no loss. But if there is a loss, such as for example absorption of the incident beam, then this flux loss SL of K को हमें दोबारा से लिखना पड़ेगा. We need to redefine this term, that is the scattering matrix. So however, this requirement requirement is not valid whenever क्या चीज हो, whenever there is absorption of the incident beam. So incident beam, and absorption of incident beam का मतलब है in this case, uh, case of loss of flux loss of flux, the uh, the SL of K must be redefined. Yeah. And how do you redefine? You say SL of K is in fact equals to Neumann function NL of K times e to the power 2 iota delta L. So we have this function, Neumann function. So you say with 0 is less than NL of K, which is less than or equals to 1. And so then the equation would change. Then the above equations for FL of K and F of theta would change. Therefore, this would mean that the equations for FL of K and F theta would change. और क्या हो जाएंगी वो? So FL of K जो है that would become L e to the power iota delta L minus 1 whole upon 2 iota k. सो दोनों के अंदर, दोनों एफ एल ऑफ के एफ थीटा के अंदर, दोनों के अंदर एन का इजाफा हो गया 2k, वेयर वी हैव एन एल ऑफ साइन 2 डेल्टा एल प्लस आयोटा
1 minus n l of cos 2 delta l, ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज, और we have this square bracket close. Yeah. And similarly we can write for f of theta, and for f theta, so this f theta would change to 1 over 2k. Summation over L is going from 0 to infinity. Then we have 2L plus 1 factor, and then we have NL sine 2 delta L plus iota 1 minus NL of cos 2 delta L. This factor, this factor, और ये bracket close. Yeah. So bracket close times मल्टीप्लाई बाय पी एल कॉस ऑफ थीटा की टर्म भी आ जाएगी. ठीक है. सो दिस इज इन फैक्ट द केस वेयर देयर इज सम एब्जॉर्प्शन. सो द टोटल इलास्टिक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? देयरफॉर द टोटल इलास्टिक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, जिसको आपने सिग्मा से जाहिर किया था, दैट सिग्मा, लेट्स से उसको इलास्टिक कर दें, दिस इज इक्वल्स टू 4 पाई summation L is going from 0 to infinity, factor 2L plus 1 angular momentum values, and then mod of FL ka whole square. And this is equals to pi over k square. Summation L is going from 0 to infinity, the factor 2L plus 1, and then we have the factor 1 plus NL square minus 2NL of cos 2 delta L, this factor. And similarly the inelastic part जो है वो उसके अंदर सिर्फ द नॉयमन होगा, द टोटल inelastic scattering cross section, stick scattering cross section, describing the loss of flux वो क्या हो जाएगा? That would be sigma inelastic, which is equals to sigma elastic, no, total inelastic. So that is in fact inelastic would be the part with pi upon k square, summation L is equals to 0 to infinity, and again 2L plus 1 factor, and the part which is basically responsible for the absorption, so that is n L square of k. And so now the total elastic cross section TOT, which is basically elastic plus inelastic. So this is inelastic. That is in fact the sum of these two terms. अच्छा, एक चीज़ ऑब्वियसली मैं डायरेक्ट स्टेप्स लिख रहा हूँ, बिकॉज आप इन स्टेप्स को वो भी कर सकते हैं, दैट इज़ यू कैन सॉल्व दीज स्टेप्स एज वेल, और इनको सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है. जैसे हमने निकाला
इनफैक्ट टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा हमने निकाला, और टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा हम निकालने के लिए हमने उसको इंटीग्रेट किया था डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, सो दैट इंटीग्रल कैन बी सॉल्व इन 3 डायमेंशंस। अगर आप उस इंटीग्रल को इनफैक्ट रिड्यूस कर देंगे इन टर्म्स ऑफ आर, थीटा एंड फाई, दैट कैन बी सॉल्व। इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पर जो इंटीग्रल्स हैं वो हम उनको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, और हम उनकी डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहे हैं, लेकिन हमें उनके बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो ये इंटीग्रल हमने लिखा पाई इन इलास्टिक का, सो अगर मैं कहूँ एन एल ऑफ के 1 के बराबर है, तो देन देयर वुड बी नो इन इलास्टिक स्कैटरिंग। बट अगर एन एल ऑफ के इज इक्वल टू 0 के बराबर है, देन इसका मतलब है वी वुड हैव टोटल एब्जॉर्प्शन, दैट इज total inelastic scattering होगी, there would not be any component of scattering, yeah, because अगर सारी के सारे incoming particles absorb हो जाते हैं तो there would not be in fact scattering, but so we would say for the values uh, thus if n l of k, if n l of k is equals to 1 हो जाएंगे, तो there is no elastic sorry, there is no inelastic scattering. There is no inelastic scattering. Yeah, but if if n l of k सिफर हो जाए, तो इसका मतलब है implies total absorption. Or then so in fact in partial, but uh, although there is still elastic scattering in this partial wave analysis. This partial wave analysis, therefore हम total scattering निकाल सकते हैं. So total scattering TOT, that would be equals to elastic scattering plus inelastic scattering, and this would be some value जो इन दोनों टर्म्स को आप ऐड कर लेंगे. So this is 2 pi by k square, summation over L is going from 0 to infinity, and then we have 2L plus 1 components, 1 minus NL of cos 2 delta L of this factor. So this is basically the in fact the total scattering. अच्छा, दूसरा एक और चीज़ ये कि हमने कहा ऑप्टिकल थ्योरम इज आल्सो वैलिड in case of inelastic scattering. So again inelastic scattering के लिए हम theta is equals to 0, that is along the direction, and so what we get also, so the optical theorem is valid for inelastic inelastic scattering. Therefore, in a similar manner, in a similar manner, हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट f of
0. That is similar मैंने इसको क्या है IE in the limit of imaginary part we would have uh, this factor which is summation L is going from 0 to infinity. We have 2L plus 1 components. Then we have imaginary FL of 0. And this is equals to 1 over 2K, which is summation over L is going from 0 to infinity. 2L plus 1, 1 minus NL cos of 2 delta L of this function. Therefore, the optical theorem relation क्या हो जाएगी imaginary part of f of 0 is equals to sigma k sigma total uh, divided by 4 pi. This is the uh, which is the optical theorem for the case of for the case of inelastic scattering. Or again, it is, as you can see, it is proportional to the scattering cross section, or here we have a total scattering cross section. Yep. So this is, in fact, your partial wave analysis scattering phenomena.